Things that future pro hackers don't do. So let's begin. And the first point is, people who only want to hack Facebook account and Insta account, they are not a future pro hacker. जो future pro hacker होता है वो हर चीज़ को एनालाइज करता है, हर चीज़ के कॉन्सेप्ट में जाता है कि वो चीज़ कैसे काम कर रही है. A future pro hacker will always go into the concept behind this kind of hackings where people are hacked by the hackers through phishing attack. A future pro hacker will always go into the depth of the tool, that how it is working. वो कैसे काम कर रहा है, उसके पीछे का सोर्स कोड क्या है, वो हर चीज़ चेक करता है. और जो फ्यूचर प्रो हैकर नहीं होते हैं वो सिर्फ टूल यूज़ करके कोई टेक्निक से सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने. और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको फ्यूचर प्रो हैकर बनना है तो आपको गूगल डॉकिंग और गिटहब डॉकिंग आनी चाहिए. अ फ्यूचर प्रो हैकर विल नेवर लीव दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स. And the third point is, a future pro hacker try to develop his own tool by using Python and other languages. जो future pro hacker होता है वो हमेशा ट्राई करता है अपने खुद के टूल बनाने को, पाइथन लैंग्वेज से या किसी और लैंग्वेज से. वो हर टूल को एनालाइज करता है कि उसके पीछे का वर्किंग क्या है. जो स्क्रिप्ट किडीज़ होते हैं वो बस किसी टूल को यूज़ करते हैं, उसको फिर भूल जाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते कि वो कैसे काम कर रहा है, उसका कोड नहीं देखते हैं, दैट हाउ इट इज़ बिल्ड. And the fourth point is, a future pro hacker will always try to be anonymous on the internet. They have tried to install Tor and search about dark web. A pro hacker will always have a knowledge about the dark web and deep web. Every hacker should know about the dark web and deep web. And the last and the most important thing is that a noob hacker will always stick at one position. They never try to gain knowledge as much as possible, not learning every day something new. But a future pro hacker will always try to learn something new every day. He keep on practicing his skills every day. He always keep on learning every day something new. So guys, if you want to learn more about cybersecurity and hacking, then you should subscribe to this channel.